Okay, students, so now we are going to start snap interview of mathematics for our student Bandit. Bandit, tell me your GATE score, your All India rank, your branch, and from where you have got interview calls. Sir, I have appeared in GATE 2022 in electrical engineering paper. My All India rank is 2 and my GATE score is 996. And I have got calls from IISc Bangalore, CDS, Computational and Data Science Department, as well as Signal Processing Department. Okay. So many congratulations for getting so good rank. So Bandit, first of all, you tell me what is Cayley-Hamilton theorem? Sir, Cayley-Hamilton theorem says that each and every metric satisfies its characteristic equation. Okay. And how we can use it? Means in what applications we can use it? So, for example, if we are successful in establishing the characteristic equation, that is by let us say eigenvalue a minus lambda I, we have established a characteristic equation, and we need to find its inverse, its cube, the fourth power, or any of the power of the matrix, and we can easily make the equation out of the Cayley-Hamilton theorem. Okay. So we have one option of writing higher powers of A, matrix A, using Cayley-Hamilton theorem. Is there any other option also available? Yes, sir. By diagonalization, we can easily find out that if we have if the matrix is diagonalizable, then we can easily find the higher powers of A. But that is with value. We can obtain the value, and by Cayley-Hamilton theorem, we can obtain an expression. So can we apply Cayley-Hamilton theorem in singular matrices also? No, sir. Like we must have if we are going to take its inverse and all, then we cannot find for singular matrix. So can we apply Cayley-Hamilton theorem in singular matrices? Yes, sir. I guess. I mean, I'm not sure about this. Let me check, sir. Yes, sir, we can. Like, for example, I have taken one singular matrix and I have established its equation. I have established the equation of that particular matrix. Now, if we want to find a higher powers, then we can find. Okay. Now tell me, what is transformation? Sir, a transformation is just a conversion from one particular coordinate system to another particular coordinate system. Like we can transform from R2 to R3, R3 to R4, or reverse R4 to R2. So we can transform one particular vector from one vector space to another vector space. Okay. What is kernel? Sir, I have no idea about kernel, sir. Rank nullity theorem? Sir, according to the rank nullity theorem, the rank of a particular matrix is so nullity of a particular matrix is equal to the number of columns, that is the size of the column space, minus the rank. So number of columns in what? Number of unknowns, we can say, sir. Number of unknowns in what? Sorry, sir? In what thing? In which thing? Sir, in a matrix, for example, we have AX is equal to 0. We have such a linear system of linear equations, and we have certain number of unknowns, and we have a particular rank of the matrix, then we can find the nullity. So what, that is called something dimension of something. Dimension of null space. Nullity is a dimension of null space. Nullity is dimension of null space. Okay. Complete rank nullity theorem, tell me. So the dimension of the null space plus the dimension of the column space equals to the total number of unknowns. This total number of unknowns in terms of dimension of something. So dimension of what? Okay. You have used two dimension term.
Yes, I sir. want third also dimension. So it can be, say, dimension of the solution space. No, that is the same as rank. So number of equations can be told as dimensions of. I'm sorry, sir. I have no idea about the dimension of this. Okay, no issue. So we have an equation x plus y plus z equal to 8. Can you tell me number of non-negative integral solutions of this equation? Sir, it's infinite. Number of non-negative Okay, non-negative integral solutions. X plus y plus z equal to 8. We have Yes. one equation. Six. Three ways. Okay. 5, 6. So it's 3 plus 6 plus 6 plus 3 plus 6 is 7, 6. 24, sir, if I'm not missing. 24. Yes, sir. Okay, we will check it later. We have a function fx equal to 1 minus x square upon 1 plus x. 1 minus x square upon 1 plus x. हाँ, numerator में we have 1 minus x square और denominator में है 1 plus x. Yes, sir. इसका ग्राफ प्लॉट करो. Sir, it will reduce to 1 minus x, sir. ओके, सो आपने ड्रॉ कर दिया है ये ग्राफ. अब इसमें एक मिस्टेक फाइंड आउट करो जल्दी से. You have done a big mistake in this problem, so identify that. Yes, sir. Okay, at x is equal to minus 1, there is the function is not, I mean, the limit will exist definitely. Sir, mistake in which sense? I mean, in the plotting? Yes. Okay.
Sir, the limit exists at x is equal to -1, but the function is not continuous at x is equal to -1. Is that? तो क्या करेंगे फिर इसमें, क्या कैसे ड्रॉ करेंगे? डॉट बना देंगे like at x is equal to -1 और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट करती है बट फंक्शन इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड एट इट. तो ये आपने आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया पहले पॉइंट? इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट? सर इट इज इम्पोर्टेंट बट वो मैंने कैंसिल कर दिया था तो 1 - x बचा था एट द एंड. ओके, अच्छा ये बताइए कि व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन? Sir, onto functions are bijective. Onto functions are bijective. And what are onto functions? Sir, onto functions are those functions for which for one value of y there are many values of x. For one value of y there are many values of x. Means many input have same output according to you. That is onto function. Yes, sir. Okay. Now you tell me what is a random variable? Sir, a random variable is a function that can assign a real value to each and every point of the sample space, and also it must be f measurable. Okay. And how do we classify random variables? Sir, there are of two types. That is a discrete random variable which take finite number of finite values which we can define, and another is continuous random variable. Okay. Now tell me how many parameters are there in exponential distribution? In exponential distribution, there is one parameter, that is lambda, and we define the function as lambda e to the power minus lambda x, where 1 upon lambda is the expected number of expectation or the mean. Okay. So can you graphically plot exponential distribution? Yes, sir. Okay. Give me some example, any one example. Sir, exponential distribution generally relates with the time, with the waiting time. For example, I went to a telephone booth, and now we will start an experiment from the point of starting. That is when I went to the telephone booth, and from that point of the time till I enter to the telephone booth, that waiting time is being called as the we will define through exponential distribution. Okay. So I conduct different snap interviews daily. Someday I conduct 10 snaps, someday I conduct 1 snap, and someday I do not conduct any snap. So let X denotes number of snaps conducted by me per day. In which probability distribution this problem will get fitted? Binomial distribution, sir. Okay. We have 3 events A, B, C. Yes, sir. Defined with respect to a sample space S. Yes, sir. Okay. So represent the event only B occurs. What will be the representation of event only B occurs? Sir, if we can define it in the form of numbers, or you want me to define in the complement form? I want to define in terms of event. As an event, how will you represent it? Event is only B occurs. A bar into B into C. What is this into? What is this into? Write down. And. Write down. Intersection B intersection C bar. Okay. And how will you represent exactly one of them occur?
So exactly one of them occurs is either A or B or C. So like A union B union C. Exactly one of them occur means A union B union C. No, wait, sir. A union B union C minus their intersection parts. Okay. Okay, Vandit, your interview is over now. एंड फीडबैक का आइडिया आपको खुद ही लगा सकते हो आप वहां कहाँ पे क्या मिस्टेक करी है आपने. हाँ सर, एक तो फंक्शंस में मैंने प्लॉट करने में ध्यान नहीं रखा था. कैली हैमिल्टन थ्योरम में स्टेटमेंट आपका करेक्ट था, बाद में कंफ्यूज हो गए आप. ठीक है ना, पहले आपने बोला कि नहीं लगा सकते सिंगुलर में. पहले मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, बट उसके बाद मैंने एक एग्जांपल ले लिया अपने आप और फिर मैंने उसका थ्योरम बना दिया. हाँ चलो, अच्छी बात है कि वहां पे अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है. ठीक है ना, इंटरव्यू के टाइम पे यू हैव टू कीप पेशेंस, कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. यस सर. हाँ ओके, तो किसी भी मैट्रिक्स में हम स्क्वायर मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं इसको. ओके सर. देन ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन ठीक है आपका. कर्नेल क्या होता है? सर कर्नेल मैंने कहीं पे पढ़ा था डेरिवेशन में, बट अभी मैं भूल गया हूँ कर्नेल एक्चुअली सर. ये जो नल स्पेस है इसी को तो बोलते हैं. अच्छा, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस. कर्नेल, कर्नेल जो है आपका डायमेंशन ऑफ नल स्पेस बोल सकते हैं इसको. ओके, मतलब नलिटी हो गया ना सर एट द एंड. रैंक नलिटी थ्योरम में जो मैंने पूछा था, आपने डायमेंशन में दो टर्म बताई. तीसरी जो होती है ना, वो होती है डायमेंशन ऑफ डोमेन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. डोमेन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. जो आप मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करते हो वेक्टर एक्स से, तो जो एक्स है वो डोमेन को ही तो डिसाइड करता है. ओके, द वैल्यूज ऑफ एक्स हम लोग बोलते हैं जो वेक्टर स्पेस जो आप लोगे इनपुट साइड में, वो डोमेन ही तो है. ओके, मैं बोलने वाला था सर डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, बट फिर मुझे डाउट लगा उसमें. उसके बाद ग्राफ में ध्यान रखो, ग्राफ में बड़ी मिस्टेक आपने करी है. वही चीज तो चेक करना है. ये तो सबको पता है, ये तो हमें पता है कि आप ए स्क्वायर में बी स्क्वायर लगा के कैंसिल कर दोगे, उसमें भी किसी नहीं है. किसी उसके बाद है कि उस पॉइंट का ध्यान रखा कि नहीं रखा. कैंसिलेशन कभी भी जीरो से जीरो का नहीं होता. हाँ, कैंसिलेशन से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि x नॉट इक्वल टू -1. ये एज्यूम करके मैं कैंसिल कर रहा हूँ. ओके सर. और -1 पे मिसिंग पॉइंट बनाना है आपको वहां पे. हाँ, मतलब वो एक होल बना देंगे चलेगा ना सर? हाँ वही बनाना है, ओपन ओपन सर्किल. यस सर. बाइजेक्टिव फंक्शन गलत बताया. हाँ, वो बाइजेक्टिव सर्जेक्टिव वगैरह वो मैं 12th में पढ़ा था, उसके बाद प्रिपेयर करो उसको. ठीक है ना, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव. इंजेक्टिव का मतलब 1 to 1. ऑन टू की भी डेफिनेशन गलत बताई आपने. शायद उल्टा होगा ना. ऑन टू का मतलब होता है रेंज इक्वल टू कोडोमेन, जिसमें रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं. ओके सर. ठीक है. यस सर. मतलब जितने भी आउटकम में पॉइंट्स हैं आउटपुट में कोडोमेन के अंदर, वो सब इमेज होते हैं किसी न किसी इनपुट की. यस सर. तो इनको रिवाइज करो. ठीक है. यस सर. रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन ठीक है, एक्सपोनेंशियल का ठीक है, लेकिन आपने जो मैंने एग्जांपल पूछा वो स्नैप इंटरव्यूज का, तो वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है. सर पॉइजन है, मतलब मुझे पता कैसे चलेगा वो? नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ इवेंट इन ए पार्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, या किसी पार्टिकुलर एरिया में, किसी रीजन में. उसमें हमारे पास एक और भी होता है ना कि नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास जब ज्यादा हो, प्रोबेबिलिटी कम हो. नहीं, वो तो बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेशन है, वो अलग है. पॉइजन का मतलब होता है किसी फिक्स इंटरवल में नंबर ऑफ इवेंट्स कितनी हो रही है और वो रैंडमली वेरी कर रही है. ओके सर, ध्यान रखूंगा. ठीक है ना. तो उसको जैसे किसी कॉलेज में कितने कैंपस प्लेसमेंट हो रहे हैं हर साल, तो वो नंबर तो चेंज हो सकता है ना, कम ज्यादा हो सकता है, रैंडमली वेरी करता है. किसी रोड पे एक फिक्स एक हमने एरिया बना लिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतने रीजन में पर डे इतने एक्सीडेंट होते हैं, वो नंबर कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, रैंडमली वेरी करेगा. तो ये सब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल होते हैं. ओके, समझ गया सर. ठीक है. यस सर. और उसके बाद ओनली बी अकर्स को पहले तो आपने गलत बोला, इनटू नहीं बोलना होता, इनटू अलग है. इंटरसेक्शन के ऊपर इनटू नहीं होता, इंटरसेक्शन यूज करो. एग्जैक्टली वन ऑफ देम भी आपने गलत बताया.
एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब है या तो ओनली ए और ओनली बी और ओनली सी, मतलब एक ओनली ए का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। ओके हाँ, और का मतलब यूनियन। यस सर, इसी तरीके से ओनली बी और ओनली सी को रिप्रेजेंट करोगे, तीनों का यूनियन कर दोगे। ओके सर, समझ गया। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।